Hi everyone and welcome back to another webinar from FitWithCura. इस वेबिनार में हम अभी ये देखेंगे कि नेक पेन किस वजह से होता है and how we can prevent it. बेसिकली काय होतं खूप वेळेला क्लिनिकमध्ये जेव्हा क्लायंट्स येतात तर तेव्हा मानदुखी घेऊन येतात पण त्यांना परत परत पण ती मानदुखी होत असते. सो नुसतं नेक पेन ट्रीट करणं हा मुद्दा नाहीये पण आपल्याला हे पण बघायचं की तो परत नको यायला. And this session is all about that. So let me quickly share my screen with you. So in this particular session, आपण ना दोन गोष्टी बघणार आहोत. एक म्हणजे मस्क्युलोस्केलेटल म्हणजे ओव्हरऑल आपल्या मूवमेंट्स, आपल्या बसण्या उठण्याच्या पद्धती, हाउ वी गेट अप, हाउ वी स्लीप, ठीक है, किस तरीके से हम सोते हैं, किस तरीके से मोबाइल फोन यूज करते हैं, राइट? तो दैट इज मस्क्युलोस्केलेटल पार्ट. एंड द सेकंड पार्ट इज हॉलिस्टिक. हॉलिस्टिक मीनिंग्स दैट कि आपकी ओवरऑल न्यूट्रिशन से, आपकी स्लीप क्वालिटी से, आपके ओवरऑल स्ट्रेस की वजह से नेक पेन कैसे मैनिफेस्ट हो सकता है, कैसे बॉडी में आ सकता है, एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट दैट. सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन. सो वन सेकेंड. अगर नेक का अगर हम एक्सरे निकालते हैं या एमआरआई निकालते हैं, है ना, तो उसमें हमें ये दिखता है कि नेक में पर्टिकुलरली 7 वर्टिब्रे रहते हैं. देयर आर 7 वर्टिब्रे इन द नेक. नाउ द फर्स्ट वर्टिब्रा इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द स्कल. अगर आप इसमें पिक्चर में देखते हो तो बेसिकली यू विल सी कि ये जो है ये स्कल पार्ट है, ऊपर का जो है स्कल पार्ट है, उसमें फर्स्ट वर्टिब्रा अटैच्ड है. ऐसे 2, 3, 4, 5, 6 और जो 7th वर्टिब्रा है दैट इज अटैच्ड टू द मिड बैक. तो बेस क्या है नेक का? इट इज मिड बैक. ओके. एंड ऑन द टॉप ऑफ द नेक व्हाट वी आर हैविंग इज अ स्कल, राइट? आपने सुना होगा ना, हेवी हेलमेट मत पहनना जब नेक पेन है. हम ये नहीं बोलते हेलमेट मत पहनना, बट वी डेफिनेटली एडवाइज नॉट टू वेयर अ हेवी हेलमेट इज बिकॉज वेट ऑफ द हेड इज बेसिकली ऑन द नेक वर्टिब्रा. तो अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा वेट आ गया और नेक में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है, पेन है, तो क्या होगा? देयर विल बी मोर डिस्कम्फर्ट, मोर पेन. Okay, now why this point is important is because many a times what people feel is कि neck में problem है तो इसका मतलब neck position में ही गड़बड़ है. Okay, many a times clinic में ये देखा जाता है कि आपकी mid back में ज्यादा stooping होने से, आगे झुक के काम करने की वजह से neck problems होती. Okay, काय होतं खूप वेळेला आपण एकाच पोझिशन मध्ये बसतो आणि त्यामुळे पुढे वाकून ती ज्या मुवमेंट्स होतात किंवा सततच्या ज्या मुवमेंट्स होतात त्याच्यामुळे हे डिस्कम्फर्ट्स जे आहेत ते परत परत येतात. कारण की मान जी आहे ती अप्पर बॅकवर, मिड बॅकवर रेस्टेड आहे आणि मिड बॅकची पोझिशन पुढे वाकून आहे. कम्प्युटरवर आहे, ड्राइविंग करताना आहे, मोबाइल फोन यूज करते वक्त है. तो बेसिकली क्या हो रहा है? तो बिकॉज नेक ऑफ द बेस ऑफ द नेक इज नॉट स्टेबल, इट इज ओनली स्टूपिंग फॉरवर्ड. तो होता ऐसे है कि उसमें बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हेडेड पोजीशन जो है वो आ जाती है एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट. ओके. नाउ on the right hand side of this image there is an MRI. Okay, I don't want you to really go into the details of it, पर आप एक पीछे थिन कॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो एक किनॉल स्पेस में ऐसे, right? That is our spinal cord. And why this is very relevant over here is spinal cord में मज्जा रज्जु. So from this spinal cord nerves बाहर आती है and these nerves especially supply your hand and they supply your chest and the mid back. तो होता ऐसा है कि अगर ये नर्व जो है इसमें कंप्रेशन आ जाए, प्रेशर आ जाए, तो नेचुरली जो डिस्कम्फर्ट्स है वो हाथ में आते हैं. Sometimes people also get lot of headache, giddiness. Okay, people also get lot of tingling, मुंग्या येतात हातामध्ये, झुंझुना लगता है, या कभी कभी चेस्ट पेन भी लगता है. वी हैव सो मेनी क्लाइंट्स जो जाके ईसीजी निकालते थिंकिंग दैट इट्स अ चेस्ट, आई मीन कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक मायोकार्डियल इंफेक्शन, मतलब हार्ट अटैक. तो ये जो है ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज द नर्व्स विच आर सप्लाइंग द चेस्ट आर गेटिंग इरिटेटेड इन द नेक. ठीक है. एंड विच इज बाय अंडरस्टैंडिंग दैट नेक के वजह से इतने सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, तो उसको ठीक रखना, उसका पोस्चर ठीक रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस किसी को बहुत दिनों से एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी,
वो बहुत सारी कुछ चीजें छोड़ चुके हैं कि बहुत तीखा नहीं खाते, तला हुआ नहीं खाते, बहुत मीठा नहीं खाते, है ना। फॉर दोज क्लाइंट्स ऑल्सो, अगर आपकी एसिडिटी का प्रॉब्लम, ये अगर आपके एंटासिड्स या कोई भी मेडिकेशन से नहीं जा रहा है समझो, तो इट वुड बी अ गुड आइडिया टू इवेल्युएट योर नेक पोस्चर। ठीक है, क्योंकि पेट में ना नेक से एक पर्टिकुलर नर्व जाती है, वेगल नर्व बोलते हैं उसे। तो वेगल नर्व कंप्रेशन की वजह से भी हाइपर एसिडिटी हो सकती है। मेनी ऑफ आर क्लाइंट्स जो क्लेम करते हैं कि नेक का प्रॉब्लम ठीक होने के वजह से उनका एसिडिटी का प्रॉब्लम कम हो गया। आप समझ रहे हो? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ आपको फिर मस्कुलर लेवल पे प्रॉब्लम नहीं आते, ये सिस्टेमिक लेवल पे भी प्रॉब्लम आते हैं, जो भी आप कम कर सकते हो। सो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड स्टार्ट, राइट, क्योंकि बहुत लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, राइट। अच्छा, नाउ व्हाई नेक पेन इज सो कॉमन, राइट? ठीक है, नेचुरली स्क्रीन टाइम ज्यादा है, राइट, वी सिट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। देर आर मेनी टाइम्स व्हेन वी लाई डाउन अँड वॉच टीव्ही, झोपून टीव्ही पाहतोय, झोपून मोबाईल फोन वापरतोय, व्यायाम शून्य, नो एक्सरसाइजेस, राइट. So what is happening? The muscles are getting weaker, they are getting tighter, right? So this also adds up to a lot of neck stiffnesses. Definitely most of us, and especially जे आपण अर्बन लाईफस्टाईल मध्ये राहतोय, we are having a lot of stress, right? Known stress, unknown stress, chronic stress, recurrent stress, right? So याच्यामुळे काय होतं, there is a lot of overload. Okay, now whenever there's a lot of tension, okay, where do we store that tension? We store it into our muscles. Okay, and because there is a storage of tension in the muscles, that also leads to neck pain. There are many people, I'll tell you, कि जिनको particularly neck pain नहीं रहता, but they say that my always these muscles are sore, कभी भी प्रेस किया ना तो पेन है। ठीक है, why? Because they are storing lot of pressure, lot of stress into the muscles, and this also needs to be reduced. रिपीटेड डेली हैबिट्स, रिपीटेड डेली हैबिट्स में क्या हो सकता है? अगर बहुत झुक के काम कर रहे हो, या फोन ऐसे पकड़ के कुछ ड्राइव कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, और इफ देयर इज अ टेंडेंसी टू लीन ऑन टू वन साइड, या अगर बहुत मोठी पिलो ले रहे हो, देयर आर पीपल हु टेक 2 or 3 पिलोज टू स्लीप, लोड घेऊन झोपतात लोक. सो अशासारखा हॅबिट्स असतील तर त्याच्यामध्ये नेकवरती कंटिन्युअसली प्रेशर्स येतात. काही लोक सोफ्यावर टीव्ही बघत झोपतात, सो असे हॅबिट्स कंटिन्युअसली, एकदा झोपल्याने प्रॉब्ली खूप मोठा इश्यू येणार नाही, पण रोज झोपतोय, येस, दॅट कुड बी अन इश्यू. सो त्यामुळे पर्टिक्युलरली सगळ्याचं कॉम्बिनेशन म्हणून देन द नेक प्रॉब्लेम हॅपन्स. इट्स अ क्युम्युलेटिव्ह इश्यू, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वन थिंग. People usually associate कि मैंने ये किया क्या, इसके लिए ये हुआ क्या. No, it's not, because it's just like cause and action. It is repeated stress which builds up as a neck pain or a chronic neck pain, and so we need to understand that part. Now, malpositioning of the neck. Now, this is very crucial. Okay, what malpositioning of neck means is कि one is forward headed posture, म्हणजे मान पुढे राहते, तर लोक म्हणतील नाही, मान माझी इतकी पुढे नहीं रहती, इतना तो नेक आगे नहीं आ रहा है. आई विल गिव यू अ चैलेंज. आप ना जाके आपका अभी 10 साल पुराना फोटो चेक करो, मतलब मैं एडल्ट्स की बात कर रही हूँ. 10 साल पुराना फोटो चेक करो और देखो आपकी नेक की पोजीशन में चेंजेस है क्या. मेनी आर टाइम्स इवन योर सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर चेंजेस, एज के साथ में वो चेंज होता जाता है. ठीक है, वी हैव राउंडेड शोल्डर्स एंड वी हैव फॉरवर्ड. ये स्टूपिंग अलग बात है. ठीक है, राउंडिंग मीन्स शोल्डर स्ट्रेट और शोल्डर राउंडेड. अभी मैंने ज्यादा दिखा है बिकॉज सो दैट यू कैन एक्नॉलेज दैट, बट अदरवाइज राउंडेड शोल्डर्स इज वन ऑफ द वेरी कॉमन थिंग. ये क्यों होता है समझो. नाउ सी, वी वर ऑल क्वाड्रुपेड एनिमल्स, मतलब ये जो है हाथ जो है, ये हमारे पहले आगे वाले पैर रहते थे, राइट, एंड वी यूज्ड टू वॉक ऑन 4 लेग्स, 4 पैरों पे हम चलते थे. फिर हमने इवोल्यूशन की जर्नी में हमने स्ट्रेट पोस्चर एक्वायर किया जब हम 2 पैरों पे चलने लगे, राइट. ये क्यों था? क्योंकि हमें ऊपर चढ़ के पेड़ के फ्रूट्स खाने थे, हमें फास्टर मूवमेंट करनी थी, करेक्ट. और जो आगे वाले पैर थे वो हमारे हाथ बन गए, और फिर हमने बहुत क्रिएटिव काम करना शुरू कर दिया, डेक्स्ट्रिसिटी आई, right? And why humans are creative is because of their brain and because of the thumb which we have, right? Because that has gone given, that's God gifted. Universe in the process of evolution has gifted us, and which is why we are able to create so many things. राईट, इमॅजिन 4 बोट वापरून काय केलं असतं, काय नसतं करता आलं. हा जो थंब आहे त्याच्यामुळे इतक्या सुंदर प्रतिकृती आणि गोष्टी आणि क्रिएशन्स आपण करू शकतो की विचारायची सोय नाही. सो बेसिकली ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या इव्होल्युशन प्रोसेसमध्ये आल्या, बरोबर. याचा अर्थ काय, दीज हँड्स वर अर्लियर फ्रंट लेग्स ना,
So what we do is when we keep sitting for a longer time, in the process of evolution, they didn't know की आपण कम्प्युटर हे करू शोधू किंवा आपण ड्राईव्ह करायला लागू. करेक्ट. कारण की आपले जेनेटिक्स जे होते ते त्यासाठी बनले होते आणि त्यामुळे जास्त वेळ बसण्याची जेव्हा वेळ आली, बिकॉज काम सगळं बौद्धिक ऑल ब्रेनी वर्क स्टार्टेड, जब दिमाग ज्यादा यूज हो गया और बॉडी कम यूज होने लगी, तो क्या हो रहा था, बॉडी स्टूपिंग पोजिशन में अभी जा रही. क्यों? बिकॉज दैट इज लाइक इट्स कोलैप्सिंग इन द ग्रेविटी. क्योंकि पीठ के पीछे के जो मसल्स है वो एंटी ग्रेविटी है, वो हमारे शोल्डर्स और बैक को सीधा रखते हैं. ठीक है. अभी वो मसल्स को बैक सीधा रखना तो आता है, लेकिन आपकी कंप्यूटर या सिटिंग पोजिशन के आगे वो थक जाते हैं, क्योंकि इतनी 7 तास 8 तास एवढं बसण्याची त्याची कॅपॅसिटीच नाहीये. दे डोंट हॅव दॅट कॅपॅसिटी. सो सिटिंग इन लॉन्ग लाइक इन वन पोजिशन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम क्रिएट्स लॉट ऑफ फटीग इन दीज मसल्स. और उस फटीग के वजह से क्या हो रहा है, वो मसल्स जो है दे आर गिविंग अप. So when they are giving up, what is happening is we are developing a lot of tightness in the chest muscles and in the neck muscle. Okay, let's do one quick experiment. आप जानना चाहते हो कि आपके neck muscles में tightness build हो रहा है कि नहीं, right? Okay, let's just sit straight first. Okay, आपकी posture को align करो, सीधे बैठो, shoulders जितने आपको पीछे ले सकते हो उतने पीछे लो. And now I want you to close your jaw. ठीक है, जो आपके दांत है वो बंद रखो. ठीक है, close your jaw. और जॉ बंद करने के बाद, ओके, व्हाट यू डू इज विद क्लोज जॉ जस्ट लिफ्ट योर नेक अप. ओके, नेक ऊपर लेना है, अपने जॉ बंद रखना है. ठीक है, धीरे धीरे करना. नेक में अगर पेन है तो ये एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि इसका मतलब ऑलरेडी टाइटनेस है. अगर नेक में पेन अभी नहीं है, दिस विल बी अ गुड टाइम टू चेक कि अगर नेक में पेन आ सकता है क्या. ओके, हे प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून वापरू शकता. सो नेक स्ट्रेट, सॉरी शोल्डर स्ट्रेट, जॉ बंद, जबडा बंद आणि मान वर. अभी अगर यहां से आपको पुल लग रहा है, ठीक है, अगर इफ यू फील दैट समथिंग इज गेटिंग स्ट्रेच्ड, राइट, दिस विल बी एन अर्ली इंडिकेशन कि नेक में जो फेशिया है, हाँ, यहाँ पे जो मसल्स है वो टाइट होने लगे हैं. ओके, डज दैट मीन दैट दे हैव ऑलरेडी बिकम टाइट, बहुत प्रॉब्लम हो गया, जिंदगी खत्म हो गई? कुछ नहीं. But that means that it is just a start of it, and you can start working onto it and reverse this issue. I told you, right, कि this session is all about the prevention. So just feel that. अगर stretch feel हो रहा है, okay, note it down and contact your physiotherapist, because there are exercises which can relieve the stress in this. ठीक है, कुछ तो भी मत करो यूट्यूब पे देखिए. अभी ये देखोगे आप यूट्यूब पे, बट वेदर द एक्सरसाइज विच यू विल बी डूइंग इज अलाइन टू योर स्टेटस और नॉट, दैट नीड्स टू बी इवेल्युएटेड. ठीक है, यहाँ पे टाइट है तो ये वाले एक्सरसाइजेस नहीं करते बैठना है. समटाइम्स देयर कैन बी अ कंप्रेशन हियर, तो वी हैव टू फर्स्ट सॉल्व दैट एंड देन डू द एक्सरसाइजेस. आई हैव जस्ट गिवन यू दैट क्विक चेकअप, एंड विच इज व्हाई आई गिव यू वर्ड ऑफ कॉशन. जस्ट चेक. अगर नेक में ऑलरेडी पेन है तो फिर तो आपको वैसे भी जाना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास. तब ये एक्सपेरिमेंट मत करते बैठना. करेक्ट? ऑलराइट. नाउ सी, I want to give you a little bit of hint on to, how you can actually prevent the neck pain. कैसे आप उसको avoid कर सकते हो. कुछ कुछ ना जेंटल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस है. अभी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, एक पार्ट रहता है विच इज योर रेगुलर नेक एक्सरसाइजेस, एंड आई फील दैट दे नीड टू बी कस्टमाइज. वो आपके लिए, आपकी कंडीशन के लिए बनने चाहिए. ओके, दूसरा पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं माइक्रो ब्रेक्स. दीज आर जनरल मोबिलिटी एंड जेंटल एक्सरसाइजेस. Now these exercises are extremely crucial. मतलब वो कैसे रहते हैं, माइक्रो ब्रेक्स. ओके, स्कूल में क्या होगा ना, हाथ ऊपर लेना, नेक की मूवमेंट करना, शोल्डर सर्कल्स, है ना, स्कैपुलर मूवमेंट्स, मतलब कंधे आगे पीछे, सिंपल सिंपल मूवमेंट्स. ओके, ये जो है, ये ड्यूरिंग योर वर्क एवरी 40 to 45 मिनट्स में एक 2-4 मूवमेंट्स आप कर लेना. Now, this helps you relieving the stress in the muscles, and it's very helpfully. This is one of the, classic way how you can prevent. मतलब even अगर आपको अभी माइल्ड डिस्कम्फर्ट भी है, इतना ज्यादा नहीं है, आपका ये वाला टेस्ट एक्सटेंशन वाला पॉजिटिव भी आया होगा, लेकिन इतना डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो आप ये स्टार्ट कर लो. शायद आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाने की जरूरत ना करे. या सो स्टार्ट विद दिस. इफ यू आर वर्किंग ऑन लैपटॉप, इफ यू आर वॉचिंग टीवी, आपका रीडिंग ज्यादा है, आपका मोबाइल यूज ज्यादा है, इफ यू आर ड्राइविंग अ लॉट,
ठीक है, तो वो 30-40 मिनट्स के बाद में जस्ट टेक दीज लाइक 4-5-10 seconds ब्रेक एंड डू दीज मूवमेंट्स. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन टिप है. क्योंकि हमें लगता है उससे क्या होगा, राइट? उससे बहुत कुछ हो सकता है. क्योंकि एक्सक्यूज मी, ओवरऑल आपकी नेक का ओवरऑल सर्कुलेशन बढ़ेगा, मोबिलिटी बढ़ेगी. और ये जो मसल्स मैंने पहले वाले स्लाइड में क्या बताया कि मैल पोजिशनिंग से क्या हो रहा है, नेक मसल्स फटीग में जा रहे हैं, थक रहे, दे आर टायर्ड, दमले ते मसल्स, राइट? सो इथे काय होतं आहे, जेव्हा स्मॉल मुवमेंट्स होत आहेत, मायक्रो मुवमेंट्स होत आहेत, द मसल फटीग्स डिलेड. वो जो टायर्डनेस है, जो वो थकावट आहे ती आपण डिले करतोय. थांबवतोय का? आन्सर इज नो, राइट? बिकॉज इफ यू आर ओव्हर युजिंग द मसल्स दे आर बाउंड टू गेट टायर्ड. नो, वी ऑल्सो गेट टायर्ड. खूप काम केल्यावर व्हाट डू वी से? बहुत काम हो गया अभी, right? The same thing your muscles are trying to say, okay? Now, you can take walking breaks also in between, okay? But if you're having neck specific issues, doing neck specific movements makes a lot of sense, okay? And the very important part is you have to balance your work and rest routine. Now, this is where the real hack is. Many people feel कि मैं ऑफिस में अगर 7-8 घंटे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, when I come back home and if I'm lying on sofa and watching TV, it's rest. Okay? Now mind you, रेस्ट आपके लिए हो रही है या आपके शायद दिमाग के लिए हो रही है, पर वो आपकी नेक मसल्स के लिए शायद नहीं हो रही है. You have to observe the right kind of posture. इसके लिए लास्ट पॉइंट देखो, इट्स अ कॉन्शियस posture correction. इसका मतलब आपको ये समझना है कि आपकी नेक की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से which position is helpful for your neck to rest. ओके? जैसे बैठने के लिए, खड़े रहने के लिए जैसे नॉर्म्स है, सो दैट यू कैन डिले द फटीग, सेम वे देयर आर नॉर्म्स फॉर स्लीपिंग. Does that mean you have to follow 100%? Does that mean you have to sleep in ideal posture? लोग हमें पूछते हैं, फिर इसका मतलब ये है कि मतलब cautiously सोना भी चाहिए? I'm like, see, even that awareness is going to bring in change. Why we are sitting and sleeping in wrong positions is not because we want to, it is because we don't know what the right posture is. You don't have to get obsessed with the right posture. You just have to know what a conscious right posture feels like. आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपसे वो काम करवाएगी, आपको कॉन्शियसली कुछ भी एफर्ट लेना नहीं चाहिए. Okay? There are many times when people, what they do, like, now I want to sit straight. Okay? And they purposefully, very forcefully, effortfully, they try and keep your spine straight. And then what happens? Maybe a day or two they will do it, but then that aggravates the pain. कारण मसल्स तो दम लेना, वो मसल्स थक गए वो प्रोसेस में, उनको इतना काम करने की फोर्सफुली आदत ही नहीं है. तो ये कॉन्शियस पैटर्न जो है वो कैसे लाएंगे? दैट कॉन्शियस पैटर्न कम्स फ्रॉम दोज कस्टमाइज और स्पेसिफिक एक्सरसाइज. जैसे मैंने कहा कि आपके लिए जो एक्सरसाइजेस बने उससे वो पैटर्न बनता है. क्योंकि हर एक पर्सन का, हर एक व्यक्ति का एक पैटर्न रहता है बैठने का, उसमें अलग अलग मसल्स के अलग अलग डायनामिक्स रहते हैं. नेक में आगे के मसल्स है, पीछे के है, साइड के है, चेस्ट मसल्स आर देयर, बैक मसल्स आर देयर आर मल्टीपल मसल्स. Okay, but which muscle is tight, which muscle is underworking, which muscle is overworking, वो आपको क्या पता? Even your brain does not know, because brain cannot sense the muscle. Brain can only sense a movement. And इसके लिए, और वो बहुत अच्छा है. अदरवाइज अगर आप एल्बो जब बेंड कर रहे हो, आई एम श्योर लाइक आप मैक्सिमम लोगों को पता हो कि बाइसेप्स इज अ मसल व्हिच बेंड्स द एल्बो, राइट? अगर आपका ब्रेन सोच रहा है अभी मैं बाइसेप्स को एक्टिवेट करूं और एल्बो बेंड करूं, तो इसका मतलब है वो तो मूवमेंट होने से रही, राइट? द ब्रेन अंडरस्टैंड्स दैट ओके आई हैव टू बेंड द एल्बो, तो बेंडिंग एल्बो वर्क डन. सो सेम वे नेक मसल्स आप पहले 1 घंटा, 2 घंटा, 7 घंटे, 8 घंटे आप यूज कर रहे हो, इसके बाद में मसल्स तो अभी थक गए, दे डोंट हैव एनी कैपेसिटी. नाउ द व्हाट इज इट व्हिच इज स्टिल getting that work done? Because the brain understands a movement, so it starts using all secondary muscles, and which is why these pains emerge very late. पहले तो आपको लगता है डिस्कम्फर्ट है, अभी तो कहाँ जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, इतकं पण दुखत नाहीये की डॉक्टरकडे जायला पाहिजे. तीच वेळ आहे की जेव्हा डॉक्टरकडे जायला पाहिजे आणि इव्हॅल्युएट करायला पाहिजे.
त्यावेळेला प्रॉब्ली औषधं नको आहेत, वो टाइम प्रॉब्ली मेडिसिन नहीं चाहिए, आपको मूवमेंट करेक्शन चाहिए। और अगर आप वो करते हो तो आपको थेरेपीज नहीं लेनी पड़ेगी। हमें क्या लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास में तब जाना है जब पेन स्टार्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट के पास तब जाना है जब डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो, जब वो पेन में कन्वर्ट ना हो। That's a very important point, and all of you remember that, and not only for neck pain, for anything. And this is so, there are like, science like physiotherapy. हम एक, we have a complete set of exercises, movement patterns, जिसे बोलते हैं प्रीहैब। प्रीहैब का मतलब है प्रीहैबिलिटेशन, और प्रीहैबिलिटेशन मतलब क्या, आपको प्रॉब्लम होने से पहले हम उसको ठीक कर लें। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम ढूंढेंगे। आपको अगर कुछ सिम्टम्स लगते हैं, आपको कुछ ऐसे लगता है कि आपका काम ऐसे है, ज्यादा देर बैठ के है, आपका ड्राइविंग ज्यादा है, तो आपको कुछ कुछ प्रोफेशंस में वो डिस्कम्फर्ट ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, तो संभावना है। तो वो प्रोफेशंस के लिए पहले ही हम इवैल्यूएशन करके, हम जिसे बोलते हैं कि इंजुरी फोरकास्टिंग, हमारा वेदर कैसे रहता है कि बारिश हो सकती है ना, फिर बहुत धूप आ सकती है, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ, हाँ नेक्स्ट वीक बारिश आने वाली है, तो वी प्लान आवरसेल्व्स लाइक दैट। हाँ, आर वी स्केयर्ड अबाउट अरे बारिश आने वाली है, नो। सो सेम थिंग, अगर कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशन है, जैसे सिडेंट्री है, आपका मोबाइल यूज ज्यादा है, आपका एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब दैट्स द बेस्ट टाइम to get yourself evaluated. Okay, now how to extend your neck safely. I've already given you an idea कि forceful backward extension मत करो, और very important thing is that you have to work onto your chest and your mid back, वो आपको physiotherapist will help you। अच्छा, neck में very important part is also vitamin D, because vitamin D supports the muscle health and the bone health। क्योंकि अगर डेफिशिएंसी बहुत क्रॉनिक है, तो इसका मतलब है आपके मसल्स में ज्यादा वीकनेसेस आने की और उसके रिकवरी पैटर्न स्लो डाउन होने की बहुत ज्यादा संभावना है, राइट। विटामिन डी जनरली मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स के लिए आपका 40 प्लस होना चाहिए। आपके रिपोर्ट्स में 30 जो है वो मॉडरेट सफिशिएंट लिखा जाएगा, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर overall vital systems, for your body to run। But understand one thing, for musculoskeletal system which comes as a secondary system in the body's priority, आपका 40 and above रहेगा तो फिर वो बहुत ही अच्छा होगा। ओके, हाइड्रेशन, इसका मतलब पानी पीना जरूरी है। आप बोलोगे कि पानी का और इसका क्या संबंध है, 100% है, क्योंकि अगर आप पानी कम पी रहे हो, इसका मतलब मस्कुलर इलास्टिसिटी कम है, यू आर यूजिंग द मसल्स मोर बट नॉट गिविंग इनफ वाटर, तो मसल टेंशन में जाएगी, स्ट्रेस में जाएगी, उसका प्रेशर आने वाला है बोन्स पे। ठीक है, और इसके लिए दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, और दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द रिकवरी। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्रूशियल पॉइंट, because I also work as a lifestyle coach and I see many clients having lot of neck pain जो बायोमेकेनिकली करेक्ट हो चुकी है लेकिन बार बार आती है। ओके, नाउ फॉर these clients, these select clients who are having lot of stress, which are holding lot of pain or discomfort inside, we also help them through nutrition and emotional release। मेंटल लोड जब ज्यादा होता है ना, there are specific areas in the body where we store these stiffnesses। इसमें से एक है आपका ये नेक मसल्स, ट्रोपीजियस जिसे बोलते हैं। तो even right now, even before you see a coach, you see a physiotherapist, one thing you can start right away is doing 5 minutes of breathing exercises। okay, आपको लगेगा उससे क्या होगा, अब जब exercise breathing, just deep breathing, just focus on your breath and don't do anything, just be in the moment and breathe, this is going to drop your cortisol levels। और कॉर्टिसोल जो एक हार्मोन है हमारा कि बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए एक्टिवेट होता है, ये मसल्स में टेंशन लाता है, क्योंकि फाइट और फ्लाइट करना है ना, या तो फिर लड़ना है या तो फिर भागना है। तो बेसिकली दैट स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूसेस व्हेन यू आर डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सो इफ यू आर हैविंग नेक पेन and
if you're holding on to a lot of emotions and it is because of the emotional tensions, just do the breathing exercises and do let us know if your neck pain reduces with that, even without doing any therapies. और आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिखना बिकॉज उसका बहुत ज्यादा कनेक्शन है. Now, how a physiotherapy can help you in this? Now, first and foremost, physiotherapists help you in assessing a posture. जैसे मैंने कहा कि shoulders stooping है क्या, neck forward headed आएगा, chest मध्ये stiffness आएगा, mid back मध्ये weakness आएगा, या सगळ्याचं combination, tight muscles काय आहेत, weak muscles काय आहेत, everything is first assessed by a physiotherapist. Now, because the muscle imbalance is assessed, we do a correction of that imbalance. This is through stretches, this is through exercises. We also give you something called as ergonomic guidance. म्हणजे अभी आपने create किया, आज तर ठीक केलंय, but we don't want you to come back to us with the same problem, right? So जर कुठे चुकीचं बसलं जात असेल, गलत तरीके से आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, सो रहे हो, तो हम एक्चुअली हर एक क्लाइंट से उनके डेस्क का फोटो, उनका स्लीपिंग पोस्चर का फोटो हम मंगवाते हैं. एंड वी गो टू दैट डीप लेवल एंड अंडरस्टैंड कि कहाँ से वो प्रॉब्लम बार बार आ रहा है, और फिर उसके ऊपर उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से हम सॉल्यूशंस देते हैं. Now, movement retraining. Now, that's very important because I'll give you one very common example. हमारे यहाँ पे जब लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आते हैं, उनका बहुत ज्यादा लैपटॉप पे काम है, ड्राइविंग ज्यादा है, तो फर्स्ट थिंग वो पूछते हैं, ऐसा कुछ ब्रेस रहेगा क्या कि जिससे कंधे पीछे हो जाए और मैं अच्छे से बैठूं. सो इसका मतलब क्या है कि they understand the logic that they are stooping a lot and this position is giving me relief. But because they don't have an understanding that how it is to be done, or they're finding easier way or the fastest way out, they think about these braces. And unfortunately, there are many companies using uh, this marketing gimmick and this gap, कि लोगों को instant fast reactions, fast results चाहिए, वो braces बना भी रहे और बेच भी रहे और हम खरीद भी रहे. मूवमेंट रीट्रेनिंग का मतलब है कि आपका ये अब आप इतने सालों से, इतने महीनों से गलत बैठ रहे हो ना, इसके लिए आपका स्टूपिंग हो रहा है. नाउ यू कॉन्शियसली स्टार्ट ट्रेनिंग द मसल्स so that your posture goes on improving, and this comes by repetition. But once you do this retraining, आपको ये कोई भी ब्रेस, कोई भी कॉलर, कुछ नहीं लगने वाला है. आई गारंटी यू दैट. हम लोग unless and until it's a case of complete like nerve compression और बहुत ज्यादा severe disc inflammations, इसके अलावा हम कोई भी पेशेंट को इस तरीके के ब्रेसेस नहीं देते. We say that your muscles have a work, they are there to do their work. तो उनको काम करने दो, उनका काम कहीं कोई और कर लेगा तो होगा क्या? They are going to get more and more dependent. And which is why there are many a times आपण म्हणतो कॉलर लागली. अरे कॉलर लागली मतलब वो कॉलर अभी हो गई, वो आपका गहना हो गया, आप छोड़ ही नहीं सकते उसको, right? So this is exactly why the movement retraining is needed. You need repeated exercises. That's the only thing which that can help you. Period. Lastly, personalized treatment plans very important because without that results नहीं आएंगे. हर एक का problem अलग रह सकता है. Okay, now herein I just want to introduce very quickly what a matrix therapy is. See, for cases which are very chronic and which are with a lot of chronic muscular tightnesses, so we don't use matrix therapy for a fresh case. We use this particularly for the chronic tightnesses. Yeah, बहुत stubborn neck pain है, बहुत पुराना neck pain है, बहुत stiffness है, postural issues है, या आपका काम ही ऐसा है कि आप जाके बार बार वही आपका repeat होने वाला है movement pattern. तो in those cases, matrix therapy works wonderfully well. It's a corrective therapy. We don't use this just for pain relief, but we use this for correction of a posture. It not only improves the circulation, it actually works at a cellular level. And it helps you draining the fluids, मतलब जो toxins है वो आपको निकालने में, और आपका सेल्स जो है सेल्युलर लेवल पे उसका न्यूट्रिशन, उसका नरिशमेंट बढ़ाने में मदद करते हैं. तो दिस इज one of the very beautiful technique for correction
ये जर्मनी से आया है, इंडिया में पिछले 10-12 साल से है, हर एक क्लिनिक में नहीं है। पर अगर आप ले रहे हो मैट्रिक्स थेरेपी, आप ये चेक करना कहीं पे भी कि आपका जो कोई थेरेपिस्ट है वो सर्टिफाइड थेरेपिस्ट है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जैसे हर एक चीज में होता है कि कोई भी नया मोडालिटी टूल आता है तो उसको यूज करने वाले जो है वो इधर दे आर अलाइन टू इट, दे आर एजुकेटेड इन दैट, और जस्ट they have a machine and they start using it. So at Cura, we have all the therapists who are certified for using this machine, और हमारे जो certificates है, हमारे जो knowledge है वो directly it comes from the source, it comes from Germany, and we have kept that quality and standard, and which is why, because see, you can imagine this machine is so helpful, the therapy is so helpful, you need special knowledge, special techniques to deliver this. Without that, it's of no use. Okay, so make sure कि आप कहीं पे भी जाओ, लेकिन आप आपके थेरेपिस्ट को जरूर पूछना है, which is why we are very proud of ourselves that अगर हमारे इसमें वो अगर कोर्सेज नहीं किए हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं किया है, तो कोई भी हमारा थेरेपिस्ट लेता ही नहीं है. So because this complements very well to what you're doing, it's a brilliant modality which can take the pain away. So there are a few key takeaways just to summarize what we spoke about. First and foremost, one important thing is neck pain is preventable, and do that. Don't come to us for treatment, come to us for prevention. Posture and movements are the key. Very important. Your nutrition matters, your vitamin D matters, your hydration, पानी कितना पी रहे हो वो मैटर करता है. आपकी माइंड बॉडी बैलेंस जो है वो सपोर्ट करेगा आपकी हीलिंग को. इफ यू आर स्ट्रेस्ड, इफ यू आर इन पेन, दैट इज गोइंग टू होल्ड ऑन टू योर नेक पेन. तो डू कंसिडर वर्किंग ऑन टू योर माइंडसेट एज वेल. एंड अर्ली केयर विल अवॉइड क्रॉनिक पेन. अगर आज सुबह उठ के नेक में स्टिफनेस है, मैं टर्न नहीं कर पा रहा हूँ, टर्न नहीं कर पा रही हूँ, ग्रेट, जस्ट सी द डॉक्टर राइट अवे so that it does not become chronic. Also, I would like to add one more thing. If you're having very chronic acidity, बहुत दिनों से acidity और acidity के tablets खा रहे हो आप, तो एक बार neck evaluate कर लो, because वो भी problem आपका solve हो जाएगा. So I would like to end this with just a quick introduction about Cura Physiotherapy Clinic. We are based in Pune, and we are at 3 locations, which is Kothurud, Baudan, and Wakad. And we basically work not only in a biomechanical perspective, but हम holistically problems को देखते हैं और उनसे deal करते हैं. We make sure that our clients are not just healing, okay? पर clients सिर्फ joint problem से heal ना हो, लेकिन वो सीखे उससे. ओके, सी आपको आपकी लाइफ में ये जॉइंट प्रॉब्लम इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि आपकी बॉडी आपके साथ फाइट कर रही है. आपका हर एक पेन, हर एक डिस्कम्फर्ट आपसे बात कर रहा है कि शायद आप ज्यादा कर रहे हो, शायद आप कम कर रहे हो मूवमेंट्स, या कुछ ना कुछ आप मोशन स्टोर कर रहे हो, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज है, कुछ ना कुछ आप ब्लॉकेजेस है, कुछ ना कुछ है, राइट? तो वी हैव टू बी अवेयर अबाउट इट. वी डोंट हैव टू फाइट विद दैट बॉडी, फाइट विद दैट पेन. तो हीलिंग जो है वो अवेयरनेस से होना चाहिए, मूवमेंट से होना चाहिए. और आप कभी भी आना, आप जरूर हमारे रिव्यूज भी चेक करना. एक चीज आप देखोगे, क्लाइंट्स जो बोलते हैं हमारे बारे में, वो ये नहीं है कि हमें हील किया या पेन कम किया, ये बोलते हैं कि हमें पेन तो कम हमारा हुआ, बट नाउ वी आर सो मच इन सिंक, सो मच इन पीस विथ आवर बॉडी, because see, that is the association, that's a good relation which you should build with the body. हम कुछ भी fight नहीं करें. I never would probably use the word fighting with something. You are healing your body. You're not fighting anything, because body is telling you something, right? It's telling you. So see pain as your friend and treat it effectively. Treat it in a way that you do not get it again. Thank you so much. Good night and take care.